Hello everyone, this is Radhika and this is my second video on the tree series. So in this video, I'll be covering the binary tree in order traversal question. In the earlier video, we have completed the pre-order traversal. Now in this one, we will be covering the in-order traversal. So let's get to the first example to understand how we can traverse in an in-order manner in a tree. So firstly, I have written the in-order traversal method. Like first, we go to the left side, then to the root node, and then to the right side. So for example, if I am using a vector, so first I'll store the leftmost node, then the root node, and then the child node. We'll understand this using this first example. And you should know recursion and iterative approach very well because we'll be using these two approaches to solve this question. So in this first part, I'll be covering the recursion approach. Fine. So this is the first question. So we are always given the root of the tree. Always. Okay. So when we are using the recursion approach, I have already written over here, we always use a recursion stack space so that the number of times we are calling the function again and again, again and again, because we are going in depth and we are using recursion. That is one function calling another function calling another function. So we need to maintain a stack space, an auxiliary stack space to store those function calls. Okay. So I have defined the recursive stack space over here, and in the output, I will be storing the in order traversal output. Fine. So in the first question, we are at one. Okay. So the node which we are traversing, we first store it in a stack space. So I have got to one. So I will make a function call for in order of one. I'll store it over here. So I have made an in order call for one. Now we'll go to the left side first of this root node, that is one. So I go to the left side, but I find that there's no node present. So I come back. Fine. There's still in order of one. I just keep a gap in between them. Yeah. So I keep in order of one. I make this function call, and I also keep uh, one in my stack space. That is currently we are executing the context for one node वन. तो मैंने अभी वन को अपने स्टैक स्पेस में रख लिया एंड मैंने वन की रिकर्जन कॉल करी है. तो वन के लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी एलिमेंट नहीं है. हम वन पे गए एंड वी नो कि लेफ्ट साइड पे कुछ नहीं है, तो हम रूट नोड पे जाएंगे. तो अब हमें रूट नोड को प्रिंट भी करना है और वी कैन स्टोर इट. तो मैंने वन को स्टोर कर लिया, वन को स्टोर या प्रिंट कर लिया. फाइन. अब लेकिन मेरे स्टैक स्पेस से वन अभी रिमूव नहीं हुआ. स्टैक स्पेस से कोई भी नोड या एलिमेंट तब रिमूव होता है जब हम उसके लिए पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेते हैं. मतलब लेफ्ट साइड भी चले गए, राइट साइड भी ट्रेवर्स कर लिया एंड देन वी कम बैक. तो हम उसके बाद उसको स्टैक स्पेस से रिमूव करते हैं. तो करेंटली अभी मैंने इन ऑर्डर ऑफ वन रिकर्सिव कॉल करी. मैं लेफ्ट साइड पे गई, कोई एलिमेंट नहीं मिला. वन के पास गई, वन एज अ रूट नोड मुझे उसे प्रिंट या स्टोर करना है तो मैंने कर दिया. एंड देन अब मैं उसके राइट साइड पे जाऊंगी. ठीक है. अब मैं राइट साइड पे गई तो आई फाउंड टू. So we made a recursive call, we making a recursive call for in order of two. Fine. You can suppose that on the bottom side of this recursive calls and everything, these are the uh, top node. That is, this is the top side of the stack and this is the bottom side of the stack for our feasibility, ताकि हम जल्दी जल्दी सीख लें. तो अब हम यहाँ पर हम in order of इसको टू को कॉल करते हैं. राइट. और अब हमारे स्टैक के सबसे टॉप पे कौन आ गया है? टू आ गया. ठीक है. अब हम टू पे जाते हैं तो अब हम टू को एज अ रूट नोड ट्रीट करेंगे इस राइट सबफिल के लिए. अंडरस्टैंड. तो अब हमने टू रख लिया है. अब हम टू के भी लेफ्ट साइड पे जाएंगे पहले. तो टू के लेफ्ट साइड पे कौन है? थ्री है. तो अब हम एक फिर से रिकर्जन कॉल करेंगे फॉर द लेफ्ट नोड, दैट इज फॉर थ्री. तो अब हम अपने स्टैक स्पेस में एक और एलिमेंट रिकर्जन कॉल एक और ऐड कर रहे हैं थ्री के लिए. फाइन. समझ रहे हो आप लोग? थ्री ऐड हो गया और अब हमारे स्टैक स्पेस में भी थ्री चला जाएगा. फाइन. अब हम थ्री के लेफ्ट में जाते हैं. बट यू शुड रिमेंबर, हमारे रिकर्जन की एक बेसिस कंडीशन हमेशा होती है. अगर और यहाँ पर यह है कि अगर हम नोड पे जाते हैं और नोड पे हमें कोई वैल्यू नहीं मिलती है तो हम रिटर्न कर जाते हैं. तो थ्री के लेफ्ट में हमें कुछ भी नहीं मिला, हम रिटर्न करते हैं. फाइन. अब हम थ्री पे पहुंचे तो लेफ्ट साइड पे कुछ नहीं है एंड देन लेफ्ट साइड के बाद हमें रूट नोड स्टोर करनी है. दैट इज यहाँ पे तो थ्री है तो हम थ्री को स्टोर करेंगे. तो हमने अपने आउटपुट में वन के बाद स्टोर थ्री. फाइन. और अभी भी थ्री हमारी स्टैक स्पेस से नहीं जाएगा. क्यों? क्योंकि अभी हमने उसकी राइट साइड भी देखनी है. बट हम देखेंगे राइट साइड पे भी कोई नहीं है तो हम अपने रिकर्जन कॉल राइट साइड पे भी नहीं कर सकते. तो वी रिटर्न बैक एंड हम बोलेंगे कि थ्री के लिए हमने पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया है एंड हम अपने रिकर्सिव कॉल में से थ्री को एलिमिनेट कर सकते हैं. फाइन. हमारी स्टैक स्पेस से भी थ्री रिमूव हो जाएगा और रिकर्जन कॉल फॉर थ्री वो भी कंप्लीट हो जाएगी. तो अभी हमारे स्टैक स्पेस में सबसे टॉप पे टू है.
क्यों 2 है? बिकॉज 2 की लेफ्ट साइड तो अभी हमने पूरा ट्रेवर्स कर लिया और अब हमें 2 भी तो प्रिंट करना है, बिकॉज लेफ्ट साइड तो कर ली, तो हमें 2 प्रिंट करना है, तो हम 2 प्रिंट करेंगे। बट अभी भी स्टैक स्पेस से नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने उसकी राइट साइड भी ट्रेवर्स नहीं करी है, तो अब हम उसकी राइट साइड पे जाकर देखते हैं, बट हमें दिखता है कि कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो वी रिटर्न बैक। अब हम कहेंगे कि हमने 2 की लेफ्ट साइड भी देख ली, राइट साइड भी देख ली, सो हम कहेंगे कि स्टैक स्पेस से 2 को रिमूव कर दो। फाइन। अब हम 2 के लिए भी ये चीज खत्म होगी। नाउ वी गो बैक टू 1। अब हम 1 के लिए कहेंगे कि हमने लेफ्ट साइड भी देख ली, राइट साइड भी देख ली, अब 1 का भी जो रिकर्जन कॉल है उसे कंप्लीट कर दो, उसको स्टैक स्पेस से रिमूव कर दो, तो 1 भी रिमूव हो जाएगा और इसका इन ऑर्डर भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो हमारा आउटपुट करेंटली 1 3 2 होगा फॉर दिस एग्जाम्पल, और ये हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है। तो दिस इज हाउ हम रिकर्जन के थ्रू इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हैं। Now moving to the second example. In this example, we will be again using this method of recursive method using the stack space. So अगर हम इसको start करते हैं तो हमारे पास root node given है, तो हम in order call करते हैं और in order of 1 और हमारी stack space में 1 आ जाता है, ठीक है। Now हम in order of 1 के बाद हम उसका left child call करेंगे, that is in order of 2. तो we make a function call for in order of 2, ठीक है। और अब हमारी stack space के सबसे top पे कौन आ जाता है, that is 2, ठीक है। हम 2 के लिए लेफ्ट साइड पे जाएंगे, टेकिंग 2 एज द न्यू रूट नोड नाउ। तो हम फॉर द न्यू फंक्शन कॉल, तो हम 4 पे जाते हैं, तो हम एक इन ऑर्डर कॉल करते हैं फॉर 4। नाउ वी फाइंड दैट देयर इज नो लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 4, so we return that, and when we return from the left side we store the root node। तो रूट नोड हमारे पास कौन है, 4, और हमारे स्टैक स्पेस में भी 4 रहेगा अभी करेंटली, तो हमने 4 को स्टोर कर लिया या प्रिंट कर लिया। नाउ अब हम उसके राइट साइड पे जाएंगे, वी फाइंड दैट देयर इज नो एलिमेंट ऑन द राइट साइड, तो हम बोलेंगे कि अब राइट साइड पे भी कुछ नहीं है, वी रिटर्न दैट। So we find that we have completed the whole execution context or the function call for 4। तो अब हम stack space से 4 remove कर देंगे because we have completed it, and हमारा function call भी for 4 will be completed, ठीक है। Now we move to 2। We can say that हमने left side of 2 traverse कर लिया, तो अब हम 2 को print कर देंगे because it is our root node, ठीक है। Now we go to the right side of 2, and हम 2 को stack space से इसलिए भी remove कर रहे हैं because we need to traverse to the right side also। So we make a function call for in order of 5। अब हम in order of 5 पे गए, and we also store 5 in our stack space, ठीक है। Now we go to 5 left side, तो 5 को as a new root node मानकर we go to the left side, so left side is 6, so we make another function call for in order of 6, और हमारे stack space के सबसे टॉप पे होगा 6। Now हम 6 के लेफ्ट पे जाते हैं, तो 6 के लेफ्ट पे हमें कोई नहीं मिला, तो we return that, and then we print the root node which is 6। तो अब हमने 6 को प्रिंट कर लिया। Now we go to the right side। Right side पे भी कोई नहीं है, we return that। हम बोलेंगे function call for 6 has been completed and we will remove it from our stack space, ठीक है। तो अब हमारे स्टैक स्पेस के सबसे टॉप पे कौन है, 5। नाउ वी गो टू द राइट साइड ऑफ 5, सो वी मेक अ रिकर्सिव कॉल फॉर 7। तो हम 7 के लेफ्ट पे जाते हैं, वी डोंट फाइंड, हमारे स्टैक स्पेस में भी सबसे टॉप पे 7 रहेगा, और हम 7 के लेफ्ट साइड पे जाते हैं, वी डोंट फाइंड एनीवन, वी रिटर्न दैट। अब 7 को हम एज प्रिंट या स्टोर कर प्रिंट कर लेते हैं, एंड देन वी गो टू द राइट साइड पे भी कोई नहीं है, वी रिटर्न दैट। नाउ वी कैन से दैट 7 के लिए हमने पूरा फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट कर लिया है, तो हम स्टैक स्पेस से 7 को रिमूव कर देते हैं, उसी फंक्शन कॉल भी कंप्लीट हो गई। Now we go to 5, so we can say for 5 we have completed the right side traversal also, the left side traversal also, and the right side। तो हमने 5 के लिए पूरा फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट कर लिया है, तो अब हम रिटर्न बैक करते हैं। तो जब हम रिटर्न करेंगे तो हम 5 को स्टैक स्पेस से रिमूव कर देंगे, ठीक है। 5 को यहाँ से स्टैक स्पेस से रिमूव कर दिया, तो नाउ वी मूव टू 2। नाउ 2 के लिए भी हम यही कहेंगे कि 2 के लिए हमने लेफ्ट साइड भी ट्रेवर्स कर लिया एंड राइट साइड भी ट्रेवर्स कर लिया, तो 2 के लिए भी हमने पूरा फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट कर दिया। राइट, 2 के लिए भी पूरा फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट कर दिया, उसको भी हम स्टैक स्पेस से रिमूव कर देंगे। तो जब हमने उसे स्टैक स्पेस से रिमूव कर दिया, तो वी गो टू 1। तो हमारे टॉप ऑफ द स्टैक पे कौन है, 1 है, तो हम बोलेंगे जब हमने लेफ्ट साइड पूरी तरीके से प्रिंट कर दी, वी गो टू 1। तो हमने आउटपुट में 1 को स्टोर कर लिया, बट अभी हमारे स्टैक स्पेस से 1 रिमूव नहीं होगा बिकॉज वी नीड टू ट्रेवर्स द राइट साइड। अब हम राइट साइड पे जाते हैं, तो हम मेक अ फंक्शन कॉल फॉर 3। हम 3 के लिए फंक्शन कॉल करते हैं, और हमारे स्टैक स्पेस के सबसे टॉप पे 3 रहेगा। नाउ हम 3 के लेफ्ट पे जाते हैं, वी डोंट फाइंड एनी एलिमेंट ऑन द लेफ्ट, तो जब हम रिटर्न करेंगे तो टेकिंग दिस एज अ न्यू रूट नोड वी प्रिंट 3। फाइन। उसके बाद हम 3 के राइट में जाते हैं, वी फाइंड 3 के राइट में कौन है, 8। तो वी मेक अ फंक्शन कॉल फॉर 8, और हमारे स्टैक स्पेस में भी वी स्टोर 8। नाउ 8 के हम लेफ्ट पे जाते हैं, ठीक है, 8 के लेफ्ट साइड पे गए, वी फाइंड 9, वी स्टोर 9, एंड हमारे स्टैक स्पेस के भी सबसे टॉप पे कौन है, 9। अब हम 9 के लेफ्ट पे जाते हैं, वी डोंट फाइंड एनीथिंग, तो वी रिटर्न बैक। तो जब हम रिटर्न करते हैं तो हमने रूट नोड को प्रिंट करते हैं, तो जब हम उसे प्रिंट करेंगे
So we'll store it in our vector एंड उसके बाद हम उसके राइट साइड पे जाएंगे, राइट साइड पे भी हमें कुछ नहीं मिलेगा, हम स्टैक स्पेस से 9 को रिमूव कर देंगे एंड हमारी पूरा फंक्शन कॉल पर 9 हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ वी गो टू 8। जब हमने अपना लेफ्ट साइड पे ट्रेवर्स कर लिया तो वी गो टू 8, तो हम 8 को प्रिंट करेंगे। नाउ वी गो टू 8 राइट, वी डोंट फाइंड एनीथिंग ऑन 8 साइड, सो वी रिटर्न बैक। तो हम कहेंगे कि 8 के लिए हमारा पूरा फंक्शन कॉल कंप्लीट हो गया, दैट इज वी हैव ट्रेवर्स द लेफ्ट साइड आल्सो एंड द राइट साइड, तो हम स्टैक स्पेस से 8 को भी रिमूव कर देंगे। राइट, तो अब हमारे स्टैक स्पेस में सबसे टॉपिक कौन है, 3। अब हमने 3 के लिए लेफ्ट साइड भी ट्रेवर्स कर दिया है, राइट साइड भी ट्रेवर्स कर लिया है, सो वी रिमूव 3 फ्रॉम आवर स्टैक स्पेस। नाउ वी हैव गॉट टू 1 और हम बोलेंगे लेफ्ट साइड से हमने लेफ्ट साइड भी ट्रेवर्स कर लिया, राइट साइड भी ट्रेवर्स कर लिया, दैट इज होल फंक्शन कॉल हैज बीन एग्जीक्यूटेड। तो हम 1 को भी स्टैक स्पेस से रिमूव कर देंगे। तो व्हेन, सो दिस इज हाउ, जब हमारी पूरी स्टैक स्पेस एम्प्टी हो जाएगी तो जब हम आउटपुट देखेंगे तो दिस इज आवर एक्चुअल इन ऑर्डर ट्रेवर्सल वैल्यू, कि हम जब भी इस ट्री को इन ऑर्डर ट्रेवर्स करेंगे we'll find this type of ordering, this type of linear ordering we'll find. Fine. So I think आपको concept समझ में आया होगा. So now let's get to the coding part of this question. So as we need to return a vector in which we have the in order list of the tree elements. So we define a vector over here. Then we define a function in which we will be passing the root node and also an answer vector. And then get the whole traversal complete, we return the answer vector. Now defining the function. Uh, and I got the fine. So in this, first we'll make a call for the left side, then we'll go to the right to the root node, and then we'll go to the right side. So we'll make a function call, and firstly we need to check if our root node is empty or if the root node is null, so we return back. So we say if root equals to null, just return back. Fine. And if we have a root node, then we go to its right side. So make a call for the right side, left side, for left side, and then the answer is there. Now when we have came back from the left, we'll actually print the current node. So current node is 1, so we'll store it or print it. So currently we need to store it. So we'll store our current root node value in our vector. And when we have stored it, we'll again make a function call for the right side. So in this, we'll pass in the right child of the root node. And this is how we'll be approaching this recursion. So yeah. Yeah. So talking about the time complexity and the space complexity, time complexity is O of n, we can say, because we are traversing all the elements. So for that, it will be requiring O of n time to traverse all the elements. So the time complexity will be O of n. But if I talk about the space complexity, since you know we'll require a auxiliary space to store a stack, to store the elements in a stack space. So you can say that the maximum number of elements which we have stored in that stack is equivalent to the height of the tree. Like the height of the tree is 3. In when we are comparing height in terms of the number of nodes present in the largest path from the root to the leaf node. So here it has 3. But if so, the stack space, the maximum stack space will be 3 of size 3, because which is equal to the height of the tree, and here also the maximum height of the tree is 4. So we can say that the space complexity will be equivalent to the auxiliary stack space size. So that is O of h, that is which is equal to log n. So yeah, fine. So these are the time complexity and the space complexity evaluated in the recursion and in the recursion stacks, in the recursion manner of solving this question. But if we are using iterative approach, which we will be covering in the next part, so we will get to that.